Hello friend, I am Lakshmi Kant. Hope you all are fine. Dear, in this chapter we start Animal Kingdom, part 1 my dear. And this one is the fourth chapter of Diversity in Living World, class 11th my dear. Dear, in this chapter, before we have to be start, first of all, I would like to say here, this is very important chapter. But the importance of the chapter on examination, that is NEET 2024 my dear. See, before we have to be start, we have to be must take here clear concept that how much the importance of this one chapter. Dear, at least 4 question must be asked in your NEET examination, right? So here this one is a very important chapter, and this one is the learning chapter. This one is not a conceptual chapter, but you have to be a tendency to learn this one. If you have a tendency to learn this one, then this chapter is very easy and simple to all of you, my dear. करेक्ट. और एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, है ना, ये वेल मूव करता हुआ दिख रहा है ना. और इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मैंने आपके सामने जो स्लाइड्स लगाया वो बहुत बेहतरीन लगाया, और एक एक चीज बिल्कुल कंसेप्ट करेंगे आपके साथ, है ना. और दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा. करेक्ट. वो हमारा इंग्लिश भी होगा और साथ साथ में हिंदी भी होगा. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ बेहतर तरीके से मैं जुड़ सकूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर कर सके, है ना. इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है नीट 2024 के लिए. तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठिए. एक एक चीज को हम लोग करेंगे डियर क्लियर कंसेप्ट. सही रहेगा? यस मैम. तो कहां से शुरू करना है और कैसे करना है? आप एनिमल किंगडम देख रहे हो ऊपर में, और मैंने इसमें किंगडम एनामेलिया की बात की. आपको पता है डियर, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. वेटेकर ने दिया था 1969. मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी. आर.एच. वेटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया, और उसमें क्या बात, किंगडम मॉन्ड्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनामेलिया. डियर, इस डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड था, दूसरा चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड, तीसरा चैप्टर था वो लिविंग सॉरी प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ चैप्टर ये जो है वो एनिमल किंगडम है. डियर, मैंने जैसे इस चीजों को खत्म किया, अब आपको एक बात समझ में ये आएगी कि प्लांट किंगडम के बाद मैं एनिमल किंगडम क्यों मैं कर रहा हूं. क्योंकि जब मैं बात करूंगा फर्दर, यानी पिछला किंगडम मॉन्डा से लेके प्रोटिस्टा, वो हम लोग चैप्टर 2 के अंदर बात करेंगे. सही रहेगा? मैंने सोचा क्यों ना हम लोग थोड़ा सा मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम लोग पहले बात कर ले, फिर इसके बाद हम लोग सिंपल के ऊपर बात करेंगे. और अच्छा ही है ना, सभी लोग ये चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीजों के ऊपर बात की जाए, यानी अपनों के ऊपर बात की जाए. वी ऑल आर व्हाट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. So that's why I'm saying here, dear. So we should have to be start from the plant kingdom. In previous lecture, I was totally given each and everything about the plant kingdoms. Now in this video, I'm going to start the animal kingdom idea. So focus here, concentrately, और साथ में करना क्या है, पेन कॉपी पेंसिल्स लेकर बैठ जाइए, एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए. एक एक चीज हम लोग बात करेंगे और क्लियर करेंगे आपके पूरे कंसेप्ट को. एनसीईआरटी लाइन टू लाइन. डियर, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बात ये करना चाहते हैं कि आखिर जब बात हम लोग करते हैं किंगडम एनामेलिया का, यानी जब हम लोग बात किंगडम एनामेलिया का कर रहे होंगे डियर, किंगडम एनामेलिया के ऊपर बात कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे किसके ऊपर बात करते हैं, यानी मेटाजोन्स के ऊपर बात करते हैं. सही है? इस मेटाजोन में सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, और होगा भी, जितने भी हमारे किंगडम एनामेलिया है यानी एनिमल्स है, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं सर, मल्टी सेलुलर. कैसे ये हमारे बेटा? मल्टी सेलुलर. तो मोस्टली द ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर, मोस्टली द ऑर्गेनिजम्स whatever the animal kingdom, they all belongs to what? Multicellular, right? And second thing is what, my dear? Heterotrophic. Second thing is what here? Heterotrophic, my dear, right? Heterotrophic. You all know heterotrophic? The organisms which cannot make their own food, they directly or indirectly depend on autotroph. And third one is what, my dear? What the third one of this kingdom Animalia? This one, the mode of nutrition. If anybody can ask you about the mode of nutrition, then what you say? That is what? Holozoic. What am I saying? Holozoic mode of nutrition. So here, three basic point is very important to all of you, my dear.
What the basic points? If anybody can ask you about the kingdom Animalia, then you say that all the kingdom Animalia belongs to what? Multicellular organisms, right? Second, what the mode of nutrition is be there? It's a holozoic mode of nutrition, heterotrophic, correct? That's one thing clear. So can we proceed? Yes, my dear, we proceed now. So if I'm saying about the kingdom Animalia, it means what? See here. Here I'm going to give classification of this very order. See, if anyone telling you about the kingdom Animalia, what I'm saying? Kingdom Animalia. What I'm saying? Kingdom Animalia, my dear. So if I'm saying about the kingdom Animalia, here the sub kingdom, what I'm saying, the sub kingdom, it means that we divide the kingdom Animalia into two parts, my dear. Getting what I'm saying? Into two parts. What the two parts is here? Let's see. Let's see first. Number one. That is sub kingdom Parazoa. What I'm saying? What I'm saying, dear? Sub kingdom Parazoa. Parazoa. Right? Parazoa. And second one is what? Sub kingdom, that is what? Eumetazoa. Eumetazoa. Correct? So if anybody can say about the U means what? What the meaning of U? Then you say what? U means what? True. U means what? True. Metazoa means what? Animal. Here the parazoa, it means that they all are primitive organisms. Mainly if I am saying that the primitive organisms, it means that they have not well defined membrane bonded organisms. They all belongs to which one? Prokaryotic organisms, not in eukaryotic organisms. But here the parazoans are what? Here the primitive metazoans. What I'm saying? What I'm saying here? I'm saying here, my dear, primitive metazoan. Metazoan, my dear, right? So if I'm saying about the primitive metazoans, it means what? They have the level of organization. Which one? The cellular level of organization. What I'm saying? Cellular level of what I'm saying? Cellular level of organization, I am saying, my dear. Correct? So here the best example, that is what? Porifera. What the example here, my dear? Porifera. So if I'm saying about the porifera, it means that they all have what? Primitive metazoans, cellular level of organization, and porifera, my dear. Hope so this thing is clear. मेरे समझ से ये बातें आपको क्लियर हो गई. क्या क्लियर हो गया? कि किंगडम एनामेलिया, जिसकी हम लोग डिविजन्स करते हैं सब किंगडम में, कितने? दो. एक है सब किंगडम पाराजोआ और दूसरा सब किंगडम क्या है? मेटाजोआ, यू मेटाजोआ. लेकिन जब बात यू मेटाजोआ की करते हैं डियर, उसमें क्या है? ट्रू हमारे जोन है, यानी एनिमल्स है. और जब हम लोग पाराजोआ की बात करते हैं, मीन्स व्हाट? प्रीमिटिव है, पुराने हैं. और ये पुराने में प्रीमिटिव मेटाजोन्स वाले क्या होते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. उनके बहुत अच्छे फीचर्स हमारे डेवलप नहीं है. ध्यान देने वाली बात. और इसमें आपका बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? पॉरीफेरा, यानी पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें पोर होता है. एग्जाम्पल पे बात करेंगे, उसके पूरे एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे. जैसे पॉरीफेरा में आप ले लो बेटा, क्या आ जाएगा? बाथ स्पॉन, साइकॉन. याद आया? यस बेटा, ये सारी बात याद रखना बेटा. हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल डायग्राम के थ्रू करेंगे, एक एक चीज को हम लोग करेंगे डिटेल्स में. लेकिन उससे पहले you have to be much concentrate here that what the classification of kingdom Animalia, my dear, right? Here the classification of kingdom Animalia into two parts. One is subkingdom Parazoa, second one is Eumetazoa. Now further, how, which one here the classes in Eumetazoa we discuss in next slide, my dear. I'm going to next slide. See, if I'm saying about the Eumetazoa, what I'm saying? Eumetazoa. So if I'm saying that Eumetazoa, it means that here what I'm saying? Here I'm saying about what? The cell. What the class? That is what? Colentrata. Here the first, that is what? Colentrata. Right? Second one is what? Colentrata. Then after what? Ctenophora. Then after what? Ctenophora. Then after what? Platyhelminthes. We discuss these all things one by one. Platyhelminthes. Third one is what, dear? Platyhelminthes nematode.
What I'm saying, nematoda. Is nematoda is also known as what, my dear? Aschelminthus. What I'm saying, Aschelminthus. And now this nematoda further divided into what? Annelida. What I'm saying, Annelida. And this Annelida further divided into what? Arthropoda. What I'm saying, Arthropoda. Next, after that, mollusca. After that, what? Mollusca. And fourth one is what? Mollusca. After that, echinodermata. Echinodermata. Then after, hemichordata. Then after what? Hemichordata. In this sequence, you have to learn. And last one is what? Chordata. Last one is what? Chordata. So if anybody can ask you about the eumetazoa, then how you classify? You can classify in very simple way. Number one, that is what? Colentrata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. So you have to be learned in this sequence, my dear. See what I'm saying here. In this sequence, you have to be learned. So whenever we have to be start this one chapter, we first have to concept here what? Whatever the kingdom Animalia, that is metazoans, all are multicellular. Number one. Second thing is what? That is what? Heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic, which one mode of nutrition is be there? Holozoic mode of nutrition, my dear, right? Now, second thing what I am telling here, kingdom Animalia further divided into sub-kingdom, that is kingdom, sub-kingdom Parazoa, sub-kingdom Eumetazoa. If I am saying that sub-kingdom Parazoa, it means that I am saying about the primitive metazoans, that metazoans that is not well defined. Cellular level of organization, here only the one class is be here, that is what? Porifera, right? And in eumetazoa, if I am saying about the eumetazoa, then it means what? True metazoan, yani true animals, my dear. Correct? Is that clear? Is that clear? Is that clear? Then tell me. Is that clear or not? Yes, clear. Now, I'm going to move ahead. If I'm saying about the eumetazoa, it means that whatever we discuss in this eumetazoa, here we discuss what? Colentrata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. In such way you have to be learned. And whenever you just go through practice, whenever you write, then it is absolutely, you learn these all things right here. Correct? Now I'm going to move ahead. Now I'm going to talk about what? The level of organization. See here, the dinosaurs is coming. Different slides में आपको different animals देखने को मिलेंगे. Interesting है कि नहीं? डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना. यस, इससे बिल्कुल नहीं डरना. मैंने ऐसा तो एनिमेशन लगाया आपके लिए, कुछ खास इंटरेस्टिंग बेहतर लगे आपको. बने रहिए, एंजॉय कीजिए. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे, सो ध्यान देंगे. सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से लेवल होगा? सबसे पहला जो लेवल होता है, जो बेसिक लेवल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सेलुलर लेवल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ व्हाट माय डियर? ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल नहीं डरना इस स्लाइड से. डिफरेंट एनिमल्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, डरना मना है ना. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आ जाते हैं डियर? यू नो, porifera. What are you saying? This one is called porifera, right? Now, second one is what? Tissue grade level or tissue level of organization. Tissue level of what I am saying? Tissue level of organization I am saying here, dear. If I am saying about the tissue level of organization, it means that there are only the two phylum is here. One is what? Phylum Colentrata. And second one is what? Nematoda. You see what? Nematoda is also known as what? Aschelminthus. What I'm saying? Aschelminthus. Right? Yes, रुक जाओ, ज्यादा नहीं दौड़ो. ज्यादा दौड़ोगे थक जाओगे. रुको यार, चलते रहोगे. ओके, दौड़ते रहोगे, मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे, काटोगे नहीं हमें. यस. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया? पोरिफेरा. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया? कोलेंट्रेटा, नेमाटोडा एंड एस्केहेलमिंथस. राइट, सही है. अब तीसरी बात आती है, ध्यान से सुनने वाली बात है.
टिश्यू लेवल के बाद फिर क्या बात आती है सर? टिश्यू लेवल के बाद आती है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन ऑर्गेन level of what I'm saying here, organ level of organization. So if I'm talking about the organ level of organization, then what here it belongs only one of the phylum there, that is what, platyhelminthes. Getting what I'm saying? What I'm saying? Platyhelminthes, my dear. Now this one is the last, that is what, organ system level of organization. Here the organ grade or organ level of organization. Now the time here to know what, organ system level of organization. Level of what? Organization. See my dear, this one is very important to know here. If I'm saying about the organ system level of organization, it means what? It means that they all belong to what? Organ system, and they all are what, my dear? See here, Aschelminthus, nematoda. Okay, tissue level of coordination, if I'm saying colentata and ctenophora, my dear. Here one thing is be wrong, just you have to be check it, not colentata and nematoda, that is wait for a moment, रुक गए, रुकना है, चलोगे, है ना? This one is important to understand here, not Aschelminthus, colentata and ctenophora. What I'm saying here, इसको थोड़ा सा सुधार लो बेटा, colentata and क्या है, ctenophora. Colentata and ctenophora, right? Now from organ system level of organization, but here they come, here come Aschelminthus, here they came what, Aschelminthus, up to what, dear, chordata. Is that clear? So this one is the basic 4 points that you have to must remember that in the level of organization. ये 4 बेसिक चीजें जो आपको दिमाग में होनी चाहिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सबसे पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोलेंटेटा, टिनोफोरा, नॉट एस्केलेमिंथस, मैंने अभी यहाँ पे सुधार कर दिया. फिर क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटीहेलमिंथस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केलेमिंथस अप टू कॉर्डाटा, माय डियर. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर एंड टू अंडरस्टैंड, राइट? Now can I move ahead, my dear? If I'm going to move ahead, then what here we find? Here we find germ layer. What I'm saying? Germ. This slide में राना टिगराना भाई साहब एकदम शांत बैठे हुए हैं, झपट्टा मारेंगे भी. तो जर्म लेयर की बात हम लोग करते हैं बेटा. तो जर्म लेयर है क्या? आपको पता होगा बेटा, हमारा बॉडी क्या है ना, डिवाइडेड है बहुत सारे क्या है, लेयर्स, है ना? तो बाहर का जो लेयर आपको ये जो दिख रहा है बेटा, ये बाहर का जो लेयर दिख रहा है, ये हमारा कैसा है, इक्टोडर्म. क्या है? इक्टोडर्म. दिस वन इज व्हाट, माय डियर? दिस वन इज व्हाट, इक्टोडर्म. व्हाट आर यू सेइंग? इक्टोडर्म. ये बाहर वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? अंदर में बेटा क्या होता है, इंडोडर्म होता है. क्या होता है अंदर में? सबसे अंदर वाला ये जो लेयर दिख रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसकी बात कर रहा हूँ. इंडोडर्म. क्या है? इंडोडर्म. करेक्ट. तो बाहर वाले लेयर क्या हो गया बेटा, इक्टोडर्म. अंदर वाला क्या हो गया, इंडोडर्म. और बीच में जो है वो क्या है, मीजोडर्म. ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो देख रहे हो, ये ऑरेंज, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, मीजोडर्म. करेक्ट. तो इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म. इक्टोडर्म बेटा कैसा लेयर होता है, आउटर लेयर. कैसा लेयर है, आउटर लेयर. और मेसोडर्म क्या है बेटा, मिडिल लेयर है. कैसा है, मिडिल लेयर. और तीसरा है बेटा इंडोडर्म, दैट इज व्हाट, इनर लेयर. इनर, राइट? क्या समझ में मेरी बात आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट व्हाट आई एम सेइंग टू? इफ आई एम सेइंग यू that about the germ layer, it means what? Germ layer, it means that the possess what, body structure. So here the outer surface, that is what, ectoderm, outer layer. In middle, that is what, mesoderm. And the inner layer, that is what, endoderm. So see here, according to the germ layer, they classified into two. One is the what, diploblastic. One is what, diploblastic. Second one is what, triploblastic. So if I'm saying about the diploblastic, see, if I'm saying about this diplo का मतलब ही क्या हो गया, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिप्लो? इट मींस दैट द ऑर्गेनिजम्स
The organism which has only two germ layer. That is outer ectoderm and inner endoderm. That is what? That is outer. Give 1 second. That is outer. Outer which one? Ectoderm. Ectoderm and inner. What one is inner? That is the mesoderm. That is what? Mesoderm. Getting my point or not? So if I'm saying that the organisms which has two germ layer, it means that they belongs to diploblastic. If I'm saying that the organisms is what triploblastic, it means that they have three germ layer. So if I'm saying about these all things, then here is basic thing that we have to be complete here. So बड़ी प्लांट मीडिया हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी? एक सेकंड देंगे. लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे थे. इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग जर्म लेयर के ऊपर बात करेंगे. अब बात आती है कि सर जर्म्स लेयर में क्या देखने को मिला. एक हमारा डिप्लोब्लास्टिक में नॉन डिवाइडिंग सेल्स है. मीजोग्लिया कैसा सेल है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स. नॉन डिवाइडिंग cell. If I'm saying that non-dividing cell, yes sir, non-dividing cell, that it means it doesn't be divide. Here the mesoglea is present in the diploblastic because they have only two germ layer. One is outer ectoderm, inner is what? Endoderm. There is no meso, that is there is no what middle layer. So here the mesoderm is non-dividing cell that doesn't divide inside the cell, my dear. Right now, here classification on the body plan. Before we have to be know here the body plan first, then we have to classify these things. So that's why I'm going to move about the body plan. So see, if I'm saying about the body plan, my dear, if I'm saying about the body plan, then here the firstly, that is what? Cell aggregate plant. What is the meaning of cell aggregate plant? It means that many of the cells aggregate together and to form what? Yes, complex organisms. Now see, यदि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को मिलाते हैं डियर, तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है. क्या बनता है? Here what form? Here what form, my dear? Here what we form? Here what we form? Here what we form? That is lack of any tissue organ. बेस्ट एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया? स्पॉन्ज. स्पॉन्ज में बेटा ना ही हमारा डिफिनिट उसके कोई टिश्यू लेवल होते हैं या ऑर्गन लेवल होते हैं जिससे वो डिफिनिट फंक्शन क्या कर सके? परफॉर्म कर सके. गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ यू, माय डियर. सो इफ वी क्लासिफाई द animals kingdom on the basis of the body plan, they divide into three parts. One is what? Cellular aggregation, blind sac, और तीसरा क्या? ट्यूब विद इन ट्यूब. Further, this tube within tube further be divided into two parts, that is protostomes and deuterostomes. See how this all things. If I'm saying about the body plan, it means that cell aggregation. What I'm saying? Cell aggregation. So cell aggregation means that many of the cells unite together and to form a plant. Lack of any tissues and organ, that is what sponges. See, यदि हम लोग बात बेटा किस क्या करें? स्पॉन्ज की बात करें. तो स्पॉन्ज हम लोग के पास कैसा है? दबाओगे फिर ऐसा हो जाएगा. तो मैंने ये कहा कि सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, थोड़ा सा उसमें टिश्यू ना हो, ऑर्गन ना हो, और उसके हम लोग क्या कर सके? उसको स्टडी कर सके. उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे? सेल एग्रीगेशन में रखेंगे. फिर आती है दूसरी बात, ब्लाइंड सैक. दूसरी क्या आती है बेटा? ब्लाइंड सैक और क्या? प्लांट. तो ब्लाइंड सैक प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल्स दैट ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, जो किसमें ऑर्गेनाइज हो चुके हैं बेटा? टिश्यू. सिंगल ओपनिंग ऑफ द बॉडी फॉर इंजेक्शन एंड डाइजेशन. आपको पता होगा हाइड्रा वाला एग्जांपल बेटा ले लो. हाइड्रा क्या कहता है कि भैया देख, मैं एक ही ओपनिंग हूं जहां से इंजेक्शन भी करेंगे और इजेक्शन भी करेंगे. सो हियर टू बैक हियर द ब्लाइंड सैक मेनली कंटेन्स व्हाट what the mainly problem is here is what they doesn't having well defined organized tissues or cell organized tissue. Single opening of the body for ingestion and egestion, my dear. So which one is the phylum? Colentrata. What I'm saying, see, I'm saying here dear mud, Colentrata and flatworms, they all belong to blind sac.
Third one, tube within tube. Suppose if I'm giving you some example here, the tube within tube. See, this one is the pen. Inside the pen, there is what a refill. You know, this one is what a refill. See, I am showing you here. This one is a refill. This one is also a tube, and this one tube is put at another tube. So that's why I'm saying tube within tube. Tube within what? Tube. Hope so. This one thing is clear. Now, so if I'm saying about the tube within tube, it means that the level of coordination is organ system. यानी लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें कौन सा आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा. दूसरा हमारा क्या है? प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम कैनाल प्रेजेंट नहीं, हैविंग टू ओपनिंग, वन फॉर द इंजेशन एंड अदर फॉर द इजेशन. माइडिया, आपको याद है ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था कभी? देखो तो जब ब्लैक से करे थे ये वाला डायग्राम बेटा, आपको देखिए क्या था, क्या हाइड्रा वाला. Correct. This one is what tentacles, my dear. This one is what the hydra, a small opening from where it goes the food. This one is what hydra. This one is what hydra, my dear. Hydra. So hydra having what single opening. This one is the what opening. This opening is only for mouth and what? Mouth and anus. For ingestion also and egestion also. Correct. So here the protostomes means what? Proto means what? First. If the first mouth develop from blastopore region and any develop later, that is called what? Protostomes. It means that if I am saying that the mouth develop from blastospore, whatever the things is here, that is totally based upon the protostomes, that the blastopore regions, which is development of the organ from where region the first anus develop, then after develop any. That is the phylum, that is what Annelida, mollusca and arthropoda. Second one thing is here is what deuteromycetes. If I am saying the deuterostomes, if I am saying the deutero means what? Other. So here the anus develop first from blastopore region and the mouth, and develop later, that is echinodermata and chordata belong to deuterostomes, my dear. Also this thing is clear. ये सारी बातें क्लियर हो गई, दिमाग के अंदर बैठा. मैंने कहा कि देखो बॉडी प्लान क्या है. बॉडी प्लान को बेटा क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान की. तो इस बॉडी प्लान में हम लोग क्या देखेंगे? तीन बातें. एक देखेंगे सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब. ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर हमारे कितने आ जाएंगे? दो, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स. राइट. थोड़ा पानी पी लें, आपकी इजाजत है. ओके माय डियर. अब क्या बात आती है? ध्यान देने वाली बात. सीलोम की हम लोग बात करते हैं. जैसे ही मैंने बात किया सीलोम मतलब क्या? बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी यानी हमारे बॉडी के अंदर सीलोम है कि नहीं? बॉडी कैविटी है कि नहीं? यस सर. स्टार्टिंग कहां से हो जाता है? माउथ से. हियर the cavity start from where? Mouth and into where? Anus, might. So this one is the basic thing. So see here what I am going to tell you. I am going to tell you about here what? Body plan. If I am saying about the body plan here, I was totally told you about that very body plan. Here I am going to tell you about what? Coelom. It's known as what? Body cavity. It means that there is a space or cavity in the body. Without cavity or the space, then doesn't it to be what? That organism is what? Coelom. So here if I am saying about this one is what? A body cavity or space or cavity in the body of some metazoa. See here, this one is also metazoa, that is animals. Allow internal organs and grow and move independently of the outer body wall. So what the main purpose of the coelom? This main purpose of the coelom is to, my dear, that allow the internal organ to grow. से हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे क्या सर? लंग्स है, किडनी है ना? तो इसकी साइज क्या हो? ग्रो हो और मूव करे क्या? इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर बॉडी. तो कोई ना कोई चीजें हमारे बॉडी के अंदर इंडिपेंडेंटली तरीके से क्या करते हैं? मूव करते हैं. सो इफ आई एम सेइंग दैट इफ द ऑर्गेनिजम्स इज मूविंग देयर इंडिपेंडेंटली देयर आउटर बॉडी वॉल, देन इट बिलोंग्स टू देयर इज व्हाट? कैविटी. बॉडी कैविटी इज देयर. वी ऑल आर इन द what? Coelom. We all have what? Coelom, body cavity. So in the same way in the organisms also. Clear? Now here
if I'm saying that the what? Body cavity coelom. Now see, there are three different types of coelomate. One is what? Coelomate, pseudocoelomate, yes coelomate. If I'm saying that the coelomate, it means that the mesoglia is not shifted, my dear. So if once the mesoglia is not shifted, how the cavity will form? This one is the question for you. See here. यदि हम लोग सीलोम को जानने से पहले बेटा ये पता ना चले कि सर आपने जो अभी बताया बॉडी प्लान के ऊपर, उसके ऊपर हमको पता होना चाहिए, तभी तो उसको समझ पाएंगे। तो हमने बोला सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब क्या हो गया? सीलोमेट का मतलब हो गया बेटा, यहां पर क्या है? सीलोमेट का मतलब, ध्यान देना बेटा, एक सेकंड देना। सिलो, हाँ, सिलोमेट का मतलब क्या? जिसमें कैविटी है, बॉडी कैविटी है। यहाँ पे सिलोमेट का मतलब क्या? ट्रू बॉडी कैविटी लिख देते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब सर इसमें किसी भी तरह कोई कैविटी नहीं होगा, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं, ट्रू सॉरी सॉरी ट्रू बॉडी कैविटी होगा बेटा, सॉरी ट्रू बॉडी कैविटी होगा। फिर आता है सीडो सिलोमेट। सीडो का मतलब ही क्या होता है बेटा? फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स बॉडी कैविटी। और ए सिलोमेट का मतलब होता है ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट। ट्रू बॉडी कैविटी क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर। तो जैसे मैंने सिलोम की बात की, इसका मतलब ही क्या हो गया कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज व्हाट? बॉडी कैविटी। So if I'm saying that the organism has body cavity, then it divides into three parts. One is coelomate, pseudocoelomate, or acoelomate. So if I'm saying that the coelomate, it means that they have true body cavity. If I'm saying that pseudocoelomate, means they have cavity, but there are some small pouches like a structure around the gut. Yes or no? Around the gut. And lastly, if I'm saying about the acoelomate, it means that the organisms which do not have any body cavity. So if the organisms they doesn't having any body cavity, then how it possible to move the organ matter? One place to another place. This one is very difficult task. Yes or no? Can I move ahead? Now see here the coelom. Sir, here the coelom, that is outer ectoderm. This one is what? Outer. This one is outer. This one is what? Inner. Correct. And this one is what? Coelom. Coelom is what? Body cavity. Body cavity, my dear. Right? Body cavity. So if I'm saying that they have the body cavity, then what the reason for that anything that to be transported inside the body? See here one by one. If I'm saying about the coelom or the body cavity, my dear. Correct. Previously I was told about the some coelom also. Let's see this one part in this one slide. Coelom. I was told about this one, no? Coelom. Very good. So now see, coelom term is clear. This one is the diagram of coelom. Here the annelids, arthropoda, echinoderms and chordates, coelomates, molluscas यानी mollusks, annelids में ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा क्या? सिमेट्री की बात करें। सिमेट्री क्या है? What is symmetry? I want to know. Symmetry means that if we cut the body into any plane, then we divide into, if equal parts, then it is called bilateral symmetrical. If we divide from the center, then it divide into many equal halves. But asymmetrical, they do not divide into equal parts, my dear. So that's what I'm saying. Getting? And if I'm saying that the what? The radial symmetry, it means that in whenever we cut from a plane, then it divides into many radii. Thing is clear? So now see, if I'm saying about the symmetry, what am I saying? Symmetry. So see here. Here the bilateral symmetrical. This one is what? Bilateral symmetrical. Here is what? Bilateral symmetrical. Body can be divided into two equal halves. Body can divide into two equal halves. Two equal halves. Correct? So if I'm saying that the body can divide into two equal halves, it means that they are belong to what? Bilateral symmetrical. That is what I'm saying. Bilateral
Bilateral symmetrical, my dear. Correct. So if I'm saying they're bilateral symmetrical, then it is known as what? Cut from any plane, then divide into two equal halves. That's seen how in house plane. This one is what? This one is what? This one is radial symmetrical. This one is radial symmetrical. So if I'm saying about the radial symmetrical, my dear, see what the thing is meaning here. Radial symmetrical. It means that body can be divided. What are you saying? Body can be divided. What? Into what? Equal halves. Equal halves. So how this equal half? Through any plane. Through any plane. Correct. So here what the phylum is here, let's see. This one is very very important. If I'm saying about the radial symmetrical, then here colentrata dear. Correct. Then after colentrata, then after what? Ctenophora, then after ctenophora, then after what? Echinodermata. Echinodermata. Listen, in echinodermata, which one is adult? Yes, this one is adult, my dear, not in larval state, because larval state, that is what? Bilateral symmetrical, and echinodermata in adult, that is what? Radial symmetrical. This one is very important to understand. So here the two thing is clear. One is what? Bilateral symmetrical. Second one is what? Radial symmetrical. So here, see, if I'm saying about the radial symmetrical, then it is clear. If I'm saying about the bilateral symmetrical, it means what? If I'm saying the bilateral symmetrical, it means that here the phylum, which one is phylum, my dear? Tell me first. In a bilateral symmetrical, that is Platyhelminthes up to Chordata. Platyhelminthes up to what? To what? Chordata. Correct. Platyhelminthes up to Chordata belongs to what? In a bilateral symmetrical. Clear? Is that clear? And one thing is here left. That is what, my dear? Tell me. That is asymmetrical. That is what? Asymmetrical. That not divide into any equal halves. Yes, body cannot be divided. Can we move? Yet asymmetrical, C, has no patterns of symmetry. Example is sponges. That is what? Sponges. Sponges. If we cut this one, there is not any equal parts divided. Asymmetrical. It means that what? Body cannot divide it. Yeah, divided into what? Equal halves. Equal halves. How? By equal halves passing through any plane. I'm saying passing through. Wait a minute. Passing through any plane. Is that clear? So if I'm saying that body cannot divide it into equal halves passing through any plane, then it is known as what? Asymmetrical, my dear. So here only one of the phylum, that is what? Porifera. That is what, my dear? Only one is what? Porifera. क्या समझ में मेरी बात आ रही है? Are you getting my point? Yes, definitely. So if I'm talking about the symmetry, it means that the body can be divided into three parts. It means that the organisms can be divided into either the what? Asymmetrical, radial symmetrical, bilateral symmetrical. Bilateral symmetrical. So asymmetrical, it means that the body having no patterns of symmetry. Second one is what? Radial symmetrical. If I am saying about the radial symmetrical, it means that exhibit in a circular arrangement. If I am saying about the circular arrangement around the central axis, you know which one? Which one is the radial symmetrical, dear? Yes, radial symmetrical, that is colentrata, ctenophora, and what? Echinodermata. And echinodermata, that is basically what?
Tell me first. Adult, my dear. Is that clear? Is that clear? Bilateral symmetrical. It means that has only one plane along the longitudinal axis that will produce identical halves. All vertebrates and many invertebrates also. Right? Is that clear? Is that clear? Then tell me first. Now, I'm going to move ahead about inward segmentation. See, here another figure of animal. Right? That is what crocodile. Na? If I'm saying about the segmentation, जब हम लोग डियर segmentation की बात करते हैं तो क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए. जैसी बात आती है segmentation में, in some animals, here what I'm writing here, in some animals, not all animals, in some animals, the body, in some animals, the body is externally and what internally divided into list some organ. List some organ, my dear. List into what? Some organ. So if I'm saying here that in some animals the body is externally and internally divided into list some organ. If it means that divided into at least some organ, it means that they have some segment is there. See here in the examples of what earthworm. This one is what, my dear? This one is earthworm. And in see here in this earthworm there is what, both monoecious, na, male and female earthworm. Here the body is divided into segments. See here, this one is the segment. Now in earthworm, what we know here in earthworm, my dear, the segmentation in earthworm, the body show in earthworm. I'm going to write here in earthworm body in earthworm, the body shows what, the body shows, my dear, shows this pattern, and this very pattern is known as what? Metameric segmentation. What I'm saying, metameric segmentation. Is that clear? So if I'm saying that in earthworm body shows this pattern, it means that they have the poses what? Segment. That is, they divided into their body into their many segments. Correct? Is that clear? Yes. Here you also know that in a metameric segmentation, and this very phenomenon, is known as this phenomenon. Getting what I'm saying? Phenomenon is known as what? What the phenomenon is known as, my dear? Known as metamerism. What am I writing here? Metamerism. See, if anybody can ask you, कोई भी व्यक्ति आपसे ये पूछ ले कि segmentation क्या है, then what you say? In some animal, the body is externally and internally divided into at least some organ. बढ़िया. सर एग्जाम्पल इसमें आप क्या बता सकते हैं? हाँ सर, क्या है इसमें एग्जाम्पल? सर एनालिडा. क्या है इसमें? आप देख लो फाइलम, कौन सा फाइलम आ जाएगा इसमें, लिख दी तो फाइलम कौन सा? एनालिडा. एनालिडा, arthropoda, and then after what? And what I'm writing here? Chordata. What I'm writing here? Chordata. So here these all phylum belongs towards segmentation. Right? Now
क्या आपने एक टर्म सुना है बेटा, सीडो मेटामेरिज्म्स? एक वर्ड आता है सीडो मेटामेरिज्म। क्या आपने वर्ड सुना है बेटा सीडो मेटामेरिज्म्स के बारे में? डेफिनेटली आपने सुना होगा। इफ आई एम सेइंग अबाउट द सीडो मेटामेरिज्म्स, इट मींस दैट दे हैव फॉल्स सेगमेंटेशन। यस, that is only their externally segmentation is there. Externally segmentation. What I'm writing here? I'm writing here externally segmentation. Externally segmentation. And best example there is what, my dear? The best example there is what? Tinea. What I'm saying? Which one? Which one? That is tinea. Hope so thing is clear. Clear? Clear about these all things? Segmentation. Can we move ahead, my dear? Definitely. Now, see. There's some segmentation. Listen, some bit, little bit points. Many animals have segmented body parts. I was told you about these things. Yes or no? In some cases, the parts of repeated over and over again, as with earthworm. I show you here in previous slide. In other animals, the segment are modified, such as with insects, they have essentially three segments. See, this one is the head, this one is the thorax, and this one is what? Abdomen, my dear. Correct? So this one is known as what? Segmentation. See, mostly students confused about the anterior, posterior, dorsal, and ventral. See, if I'm talking about in animals, the outer anterior regions, backside that is posterior, dorsal upper region, ventral lower region, my dear. Correct? So this one is dorsal. Dorsal is which one region? Upper region. This one is ventral. That is what? Lower region. This one is posterior, back side. This one is anterior. Yani front. What I'm saying? Front, my dear. Correct? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत सेगमेंटेशन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान दे एक एक चीज को। Listen carefully, my dear. Then after you understand that what I'm saying to you. See, in segmentation, the thing is what? In segmentation, what the thing is here, my dear? In some animals, the body is externally and internally divided into at least some organ, right? What the phylum is there? Phylum is Annelida, Arthropoda, and Chordata. Correct? In pseudometamerisms also, that is externally only segmentation, not internally. That is example is what? Tinea. Here the best example of the body segmentation, that is what? Earthworm. So if I'm saying about the earthworm, it means that in earthworm body shows this pattern. Which one pattern? Sir, externally, internally body divided, known as what? Metameric segmentation. And this very phenomenon is called what? Metamerisms, right? Now see, in this one segmentation, many animals divided into segments, any body parts. Just I told. In some cases, the parts repeated over and over and again. Just you see, having earthworms. In other animals, that is divided into three many parts. That is what? Three segments. That is head, thorax, and abdomen. Correct? Correct. Now, my dear, I'm going to here telling about this Mr. diagram. This is very, very important to know, my dear. This one is very important. Okay, you keeping this thing in mind. Now, notochord. If anybody can see what danger animal, हम लोग पहले ऐसे ही थे। अब ना जाके हम लोग एकदम डेवलप्ड हो गए हैं, पहले ऐसा ही थे। रुक जाओ भाई, तुम्हारा नहीं पकड़ने है ना? यस, हम लोग डर गए हैं, नहीं पकड़ना है। यस, नोटोकॉर्ड। सी, नोटोकॉर्ड की बात यदि हम लोग करते हैं डियर, तो क्या समझते हैं? ये एनसीईआरटी की बेटा डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में भी ये बना हुआ है ना? पहले नोटोकॉर्ड को समझो ध्यान से। नोटोकॉर्ड बोलते किसे हैं? डियर, नोटोकॉर्ड की जब बात करते हैं ना, तो सी, मैं कुछ लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड is what? Mesodermally. What I'm saying? Mesodermally. Mesodermally. Derived. Derived. What I'm saying? Rod-like structure. Rod-like. Rod-like structure. So if I'm saying that the notochord is mesodermally derived,
what rod like structure formed on the where dorsal, मैंने भी थोड़ा देर पहले ही बात किया है किसके ऊपर, डॉर्सल साइड, किसके ऊपर, डॉर्सल साइड है ना, इन विच स्टेट ड्यूरिंग 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 embryonic development. Yes, correct. During what? Embryonic development. Correct, definitely. During what? Embryonic development, my dear. Embryonic development. Correct. In every animals? No. In some animals. What am I saying? In some animals. Getting? So notochord is mesodermally. If I am saying about the mesodermally, it means that what? The middle layer of the body. Outer ectoderm, middle mesoderm, inner endoderm. So here I am going to tell you about the notochord. Notochord is mesodermally derived from rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals, not in all animals. See, listen what I am saying. Animals with notochord are called, this is very important line, animals with notochord. If I'm saying that the animals will having what notochord, then it is called what are called chordates. Animals with notochord called, what I'm saying, chordates. What I'm saying here, dear, chordates, right? Chordates, and those animals, and what I'm saying here, listen, and those animals which do not, which, just a minute, which do not possess, what I'm saying, possess chordates, then it is called, what, non-chordates. Then it's called what, non-chordates. करेक्ट, समझ में आ गई बात. इसमें हम लोग यदि बेटा यदि फाइलम की बात करें, इसकी बात करें, फाइलम की यदि बात करें तो सी है, इसमें कौन कौन से फाइलम हमारे आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कहां से लेके कहां तक हमारे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं. इसके अंदर नॉन कॉर्डेट्स की बात कर ले, यदि हम लोग वाले नॉन कॉर्डेट्स की बात कर ले तो फाइलम पॉरीफेरा, क्या बोल रहे हैं, पॉरीफेरा, अप टू पॉरीफेरा से कहां तक, इकाइनोडर्मेटा, है ना. तो पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक क्या कहलाता है सर, नॉन कॉर्डेट्स कहलाता है. क्या कहलाता है, नॉन कॉर्डेट्स कहलाता है. करेक्ट. और इसके बाद बेटा पॉरीफेरा कॉलेंटेटा, है ना, याद है ना, पॉरीफेरा कॉलेंटेटा डिनोफोरा प्लेटिहेलमिंथस एस्केहेलमिंथस एनालिडा, है ना, आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा. करेक्ट. हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, कॉर्डेट्स के. करेक्ट, ये बात समझ में आ गई. कैन वी मूव अहेड. अब इस डायग्राम को जरा सा देखो, ये हमारा क्या है, दिस वन इज व्हाट, नोटोकॉर्ड, दिस वन इज व्हाट, नोटोकॉर्ड. This one is the dorsal hollow nerve cord. See, this one is yellow in color, and this one is what, muscle segment. See, this one is muscle segment, muscular post anal tail. This one is anus. This one is pharyngeal silt or clefts, जहां से फिल्टर होते हैं नहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन. And this one is what, clear, clear in the notochord, clear, the thing is clear what I'm saying here. So notochord thing is clear. So muscle segment, this one is what, muscle segment, this one is what. So see, in the notochord is mesodermally divided rod-like structure formed on the dorsal during embryonic development. तो embryonic development के समय में ही क्या होते हैं, notochord mesodermally derived हो जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, rod-like structure. करेक्ट. ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड होते हैं कॉर्डेट्स कहलाएंगे, ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे. नॉन कॉर्डेट्स कहां से आ जाएंगे, फाइलम पॉरीफेरा अप टू व्हाट, इकाइनोडर्मेटा. राइट. क्या यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए.
तो होप सो इन सारी चीजों को आप क्लियर रखेंगे। फिर हम लोग बेटा इन सारी चीजों को जानने के बाद एक चीज थोड़ा सा ये दिमाग के अंदर कंसंट्रेट करना है कि सर ये सारे पढ़ क्या रहे हैं। ये सारे थे बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस ऑल आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी एनिमल। अब क्या बात करेंगे, फिजियोलॉजी की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने जो भी बातें किया मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको कि क्या क्या मैंने किया, स्लाइड बाई स्लाइड आप चेक कर सकते हो। आई एम गोइंग टू बैकवर्डली, है ना। चेक करो, मैंने यहां से शुरू किया है आपको बताना, सिलोम से भी पहले, बड़ी प्लांट से भी पहले, लेवल ऑफ प्रोडक्शन से भी पहले, है ना। यहां से मैंने शुरू किया। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी पॉइंट आपको क्या होनी चाहिए बेटा, क्लियर होनी चाहिए कि क्या है एकदम एनिमेलिया की, है ना। तो कैसा एनिमेलिया है, आप कैसा बोलोगे, सर मल्टी सेलर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट follows, राइट। किंगडम एनिमलिया को कितने सब किंगडम में डिवाइड किए, दो, किंगडम पाराजोआ, यू मेटाजोआ। फिर क्या सर, किंगडम पाराजोआ कैसा है, प्रिमिटिव मेटाजोआ है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही है, फाइलम कौन सा, बॉरीफेरा, है ना। यू मेटाजोआ में क्या आ जाते हैं, ट्रू, यानी ट्रू मेटाजोस, और उसके अंदर जो फाइलम हम लोग पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कॉलेंटेटा, थिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्काई, कैनोडार्मिटा, हेमिकोर्डाटा, कॉर्डाटा। In such way you have to be speak. Is it possible? Yes, definitely possible. How? Whenever you write in your copy, learn, write, learn, write. So this way is the process only and only that you have to be remember these things. केवल यही एक तरीका है बेटा, लिखो और याद करो, लिखो और याद करो। इससे क्या होगी, चीजें आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कैसे चीजों को पढ़ना है, यू हैव टू बी डिटरमाइंड, यू हैव टू बी फोकस। Without focusing on your goal, you cannot achieve goal. So first of all, you focus on your goal. That you have to be up. Otherwise, you never achieve my goal. Is that clear? So see how the thing is to be clear. This one is very important to know that what the thing is to be clear. Getting my point? So this one is very, very important, my dear chapter, and this one is definitely learning chapter. So you have the capability to learn something, then it is very easier chapter for you. If you have the capability to not to learn, then it is not a short trick to be understand. Getting, so there is not any shortcut method to be learned. You have to be practice. You have to be right in more than 5 times, if possible. Write at least 3 times. Then after you, if you not completed in 3 times, then you write 5 times. So this one is the only way that have to be remembered. So all this file you have to be just clear here, and then after write down in your copy and go through practice and practice and practice. Then the thing one day clear to all the things, and you are able to crack in 2024. Thank you for watching. Thank you. Have a nice day. Soon we meet in next video. We discuss what general physiology of animal kingdom idea. That is in part 2. Thank you for watching. Thank you.